Hello dear students. In today's lecture, we will learn about theme which we can apply on the slides of our presentation. So first of all, you must know the meaning of theme. So basically theme is a set of predefined format which include colors, fonts and effects which we can apply on the slides of our presentation. Meaning जो थीम है उसमें कुछ फॉर्मेट प्री डिफाइंड सेट होते हैं उन फॉर्मेट्स के अपने कलर्स हैं अपने फॉन्ट्स हैं अपने इफेक्ट्स हैं जिसे हम जस्ट अप्लाई करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स पर उसके बाद पावर पॉइंट प्रोवाइड फीचर of built-in themes which allow us to create our presentation which will look like the professional presentation without spending a lot of time for formatting. Means PowerPoint का जो फीचर है built-in theme का उन themes में already colors, fonts, effects already उसमें predefined set हैं हमें just उन themes को यूज करना है अपने प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स पर उन्हें अप्लाई करना है ताकि हमारी प्रेजेंटेशन प्रोफेशनली प्रेजेंटेशन लगे बट वी डोंट नीड टू स्पेंड मच टाइम ऑन द फॉर्मेटिंग so this is very easy and interesting topic which we are going to use in MS PowerPoint. So let's check how we can apply theme on our presentation. So suppose I have created a presentation of 6 slides here. First slide, second, third, fourth, fifth and sixth. Now we will check how we can apply theme on slides of this presentation. So to apply the theme on our presentation, first of all, we have to click on the tab design. As we all know, we have tabs in MS PowerPoint window, home, insert, and third tab is the design. We have to click on design tab. In design tab, we will find group themes. In themes group, we have a number of theme which we can apply on our presentation. So let's check. अब ये एक लिस्ट ऑफ थीम्स हैं हमारे पास जिसमें ऑलरेडी कुछ कलर्स फॉन्ट्स इफेक्ट्स प्रीडिफाइंड सेट है हमें जस्ट विद द हेल्प ऑफ वन क्लिक इस थीम को अप्लाई करना है हमारी प्रेजेंटेशन. So let's check. Suppose I'm going to use this theme. So I have to just click on this and we can check with the help of slideshow. Theme has applied to our slides of the presentation. So this is very interesting way. We haven't done any formatting. We have used just theme. This is a way in which we can apply theme on each and every slide of our presentation. But अगर हमें only few slides पर ही अपना कोई theme apply करवाना है, how we can do in that case? I'm doing undo with the help of Control Z. अब हमें suppose we have 6 slides in this presentation. Suppose मुझे सिर्फ first, third and fifth only इन 3 slides पर ही कोई particular theme apply करवाना है. उस केस में हम क्या करेंगे? We are going to select only those slides on which I want to apply a particular theme. So कैसे select करते हैं? First, I have clicked on the first slide. Then after that, I don't want to select the all slides. Then I have to press Control key from the keyboard, Control key, and then click on that slide on which I want to apply this theme. Then again, I have pressed Control key and I have clicked on that slide on which I want to apply a particular theme. तो मैंने 3 स्लाइड सेलेक्ट कर ली, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ. नाउ चेक, डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे, पर्टिकुलर जो थीम आपको अप्लाई करना है उस पर राइट क्लिक करें, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स. चेक करें, फर्स्ट स्लाइड पर अप्लाई हो गया, सेकंड पर नहीं, थर्ड पे हो गया, फोर्थ पे नहीं, फिफ्थ पे हो गया, लास्ट